Ladies and gentlemen, the political, unapologetic, opinionated, and unique IQBAL for the second time on the mic. Thank you so much, my friend. It's always a pleasure having you on. Thank you guys for inviting me for the second time. मैंने actually नहीं expect किया था कि मैं इतनी जल्दी इतने छोटे स्पैन में वापस फिर से second time आ जाऊंगा. So thank you for giving me a platform. I mean, we have a reason for inviting you on. We'll get to that later, but we also have Dana in the studio. Yes, sir. Do you wanna plug the subscribers and the buy me a coffee and everything? They're not listening to us. Yeah, for sure. But before that, I just want to say we had to call IQBAL on because it was so nice. We had to do it twice. But more than that, I also want to say, guys, what's the number, my friend? Executive producer of the year, by the way, Umar Fassi Bashir, the best damn podcast producer in the game. 80% of you don't subscribe when you watch our content. But I mehrbani tameez kijiye or subscribe kijiye. Please support the channel. We're mostly just running on empty, trying to cover combat sports, music, arts, culture, everything in Pakistan. And also, the subscribe won't cost you anything, but if you want to spend money, go to the link in bio, buy us a coffee as low as $1. You can go support on the mic by paying us that amount once as a subscription, whatever. Anyway, enough of selling our soul to the devil. IQBAL, my friend, the first most important sabse zaruri sawal is not about the work you've been doing. It's not about, anything else, but how are you doing? How are you feeling? How's it been in the last, let's say, month? In the last month, I would say कि especially with the album coming out, मुझे लग रहा है जैसे chest के ऊपर से ना बहुत बड़ा एक वजन उतरा है because I think I mentioned this last time कि कब से I've been half of this album was written पहले से काफ़ी अरसे से 2 साल से मैं बैठा हूँ उस पर तो हाँ तो I feel very relieved, I feel very liberated to a certain extent and I feel very fulfilled getting it out there. एंड जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे बहुत खुशी है लेकिन मोर सो फुलफिलमेंट इस बात की कि निकल गई है बाहर एंड इट्स आउट देयर. Yeah, ladies and gentlemen, the new album Divide and Rule. Do check it out. All the links are in the description below. Spotify, YouTube, it's all there. IQBAL, obviously अभी बात हुई है कि क्या चेंज हुआ है. उस 7-8 महीने पहले I think when you came on, things were a bit different. तब you were sort of in a writing block. You weren't sure when it was going to come out. You were very uncertain कि क्या scene चल रहा है. Even though you had a few things written down जो कि final album में आई हैं. But album की अगर हम बात करें, so the first most interesting thing that pops out is the name. What can you tell us about the name? Why did you choose the name? Because मैंने क्योंकि I sat down with you for an hour in the last podcast and I know you're a very thoughtful and deliberate person in terms of the choices that you make. Why did you choose this name? Why did I choose Divide and Rule? अच्छा usually ये होता है कि I'm very fond of art which is open to interpretation. आप फिल्में देखते हो और you're expecting a closure होगा. मुझे वो चीज़ें पसंद है जिसमें open endedness होती है and it leaves room for discourse. ठीक है for some reason. और ये मेरे आसपास कभी कोई दोस्त हो ना उन लोगों को चीज़ बहुत bother करती है कि if I recommend stuff it's all on उसकी ending पर they're always like ये हुआ क्या वो look up करना पड़ता है फला explained ending explained जो भी. तो I always like consuming stuff and also making stuff which leaves room for discourse and discussion etc. तो मुझे ना बड़ा सवेर किस्म का एक imposter syndrome in the sense that once it's out there then I think it's public property to a certain extent. Then people give it meaning. Like, and obviously I do have certain things in mind. Divide and Rule, obviously there was the colonial aspect uska. The album has a lot of referencing. You might have picked on us cheese pe. Lekin uske alawa there are other reasons also why I wanted to choose this name specifically because I can say this is also it's in terms of the production. I think this is also some of my poppiest, bounciest work to a certain extent, especially like songs like Fraudy and Rendo. ठीक है तो Divide and Rule उस sense में भी कि there are two different sides almost. Like even the way the album is structured, you have Sutto, KK AZIZ to intro, but you have Sutto hard-hitting political song, and then you have Fraudy, a bounce, and then Pechan, extremely. I love Pechan. And then I switch to the other side, so I'm constantly switching. उस तरह दो साइड में फिर रेंदो आता है ठीक है तो उस तरह बैलेंस है. देयर आर टू साइड्स. डुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है. वेयर टू थिंग्स आर रनिंग पैरेलल टू वन अनदर. तो आई यूज दैट आइडिया अपने म्यूजिक में भी. And so what's interesting for me is okay, of course we're going to get into a lot of the political aspects of the album, but style wise and purely in terms of rap,
do you find it hard to switch between these two genres, or do you have to convince yourself that let's make it a little poppy, let's make it a little more recent, less maybe lyrical, because your work of course is very based in the lyrical flows, the rap aspect of it, right? So do you have to debate with yourself, okay, well, let's go a little pop, let's make it a little more commercial, so to speak? It was a challenge मेरे mind में, और लेकिन at the same time this challenge judging myself वाला aspect is not something new मेरे लिए, because अगर मैं अभी भी देखूँ ना, I have rapped longer in English than I've rapped in Urdu, because I started rapping in English when I was like 17, 18. ठीक है, तो अभी उर्दू में रैप किए हुए तो मुझे रैप म्यूजिक निकालते हुए खुद 2019 और 3 साल, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए कितना बड़ा स्टेप था, स्विचिंग फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू. तो एक दफ़ा आपकी वो फाउंडेशन सॉलिड बन जाए ना, तो आई कैन नाउ जंप ऑन एनी बीट. लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज अ लेवल ऑफ सेल्फ डाउट कि क्या मैं पॉलिटिकल कंटेंट को फिट कर सकता हूँ इस तरह की प्रोडक्शन में जो विद साउंड्स बाउंसी, जैसे फ्रॉडी की बीट है, रेंदो की बीट है. तो आई वाज आल्सो चैलेंजिंग माई सेल्फ अगेन इन दैट सेंस, एंड luckily it was so comfortable because I had rapping on beats such as boom bap 90s की जिस तरह की beats नहीं होती, उसके बाद अगर आप उस पे फ्लो कर लेते हो ना, स्लो 80 टेम्पो वाली बूम बैप हार्डकोर ग्रिटी स्टाइल बीट्स पे, तो फिर ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, एफर्टलेस था मेरे लिए. तो हाँ, तो इट वाज अ चैलेंज इनिशियली मेरे माइंड में, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन it was effortless. And sorry, just to follow up on that real quick, I also feel as if the messaging behind the songs enhances in a way that, if it's more accessible to more people, the concepts behind the song, the lyrical insinuations, क्योंकि हाँ, of course आप रेंदो को दो तरीके से सुन सकते हो, राइट? कि एक तो obviously बस आप गाड़ी में ड्राइव करो, आप कह रहे हो हाँ भाई रेंदो, and then there's of course the aspect of sitting and thinking about what the song's trying to tell you, and people tend to intersect between both these. Did you just have visual of me driving saying रेंदो? Sorry guys, but I feel like that only enhances the political message, right? नहीं वो balance मुझे लगता है मुझे luckily बहुत अच्छा मिल गया इसमें. Like I managed to strike that balance between having something which you can vibe to, but at the same time pick on कि उसमें क्या बात होती है, especially with songs like Fraudy वगैरह etc. So definitely you're one of the few artists, I think, I'm not sure, but हमारी hip hop के अंदर जो इंग्लिश से उर्दू में, जो पहले बहुत रेगुलरली इंग्लिश में करते थे, उसके बाद उर्दू में गए हैं. एंड यू ऑल्सो रेफरेंस दिस चेंज कि मैं पहले इंग्लिश में करता था, मैं उर्दू में गया. इट वाज अ बिग, व्हाट्स द डिफरेंस टू समवन हु डजंट राइट सॉन्ग्स, जो सुनता है सिर्फ रैप? ऑब्वियसली लैंग्वेज जिस तरह हम कंज्यूम करते हैं इंग्लिश और उर्दू और उसकी रैप, वो फ़र्क है, बट राइटिंग प्रोसेस में किस तरह फ़र्क होता है? हाउ इज़ इट डिफरेंट? इज़ इट मोर डिफिकल्ट टू राइट इन उर्दू और इंग्लिश? व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? देखो आपकी जो एक हमारे घरों में जो सेटिंग में ज़बान बोली जाती है ना, जिसको क्या कह लो, मदर टंग कह लो, जो भी मादरी ज़बान जो भी कह लो, इट्स आई थिंक यू आर ऑलवेज मोर कंफर्टेबल उसमें. लाइक आप सोचते हो उसमें कुछ बचपन से एज अ लिटिल न्यू बॉर्न इन्फेंट उसके ऑनवर्ड्स यू ऑलवेज बीन एक्सपोज्ड टू, हाँ, एटलीस्ट इन मेरे घराने में उर्दू. मैं कराची में मेरा बचपन गुजरा, तो आई वाज अराउंड उर्दू स्पीकिंग पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं पंजाबी नहीं बोल सकता इवन दो, बिकॉज मेरा बचपन सारा कराची का. इवन दो लाहौर में आई स्पेंट हाफ ऑफ माई लाइफ, पीछे से मैं कश्मीरी हूँ ऊपर से, वो अलग बात है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा रहा है मुझे उस चीज़ का. लेकिन हाँ, आई थिंक कि बिकॉज जिस ज़बान में आप सोचते हो उसमें इट इज़ कंफर्टेबल आप हमेशा होते हो. लेकिन आई थिंक आई वाज लकी इन द सेंस, लकी तो नहीं लेकिन कॉन्शियस डिसीजन थी इन द सेंस कि मैं इंग्लिश में भी पॉलिटिकल म्यूजिक कर रहा था, तो मेरे लिए वो स्विच इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज आई Ladies and gentlemen, Pakistan Zindabad. Light चली गई थी. We are back now. It was one of those, हम लाइट लेके जा रहे, लेके वापस आ गई है. So it's back. We're good. Iqbal still in the podcast, still in the studio. Thank you for not leaving. We were talking about transitioning from English to Urdu. I don't know how much of that we got, but let's just go again. I can tell again. So you were asking कि was it difficult switching from English to Urdu and then तो मैं ये mention कर रहा था कि luckily मेरा content English में भी यही रहा है. तो एक तो पहली बात ये इस सेंस में it wasn't that difficult. लेकिन generally I do think कि जिस ज़बान में जो आपके घर में brought up, जिस ज़बान में हुआ होता है when you're an infant and as you're growing up, जो आपके आसपास ज़बान बोली जाती है ना, आप सोचते भी उसी usually ज़बान में. तो I think it always helps. Sure, if you grew up in a setting, westernized setting है, जो भी जहाँ पे ज़्यादा अंग्रेज़ी में हमेशा से communication की गई, I think you'll be more comfortable उसमें. खैर
तो मैं ये बता रहा था, मी पर्सनली आई ग्रू अप इन कराची, मैं पीछे से कश्मीरी हूँ, आगे की ज़िंदगी लाहौर की है, तो मैं ऊपर से पहले ही एक अलग एक आइडेंटिटी क्राइसिस था उसका. तो it was a challenge definitely, लेकिन because I've had that very strong foundation again of political rap music, consume भी वही किया था पीछे से, Immortal Technique and Loki etc, Vinny Paz, Jedi Mind Tricks, hardcore underground rap music. तो I already knew कि किस तरह की आपकी structure होती है punch lines की, किस तरह आप referencing करते हो. तो उस सेंस में इतना मुश्किल नहीं था. मुश्किल वहाँ था जब vocabulary की बात थी. अब that's where I had to educate myself on बहुत ज़्यादा, reading a lot of poetry fairs etc. Luckily यूनिवर्सिटी में भी मैं उसी तरह के कोर्सेज ले रहा था जो मेरी enhance कर सके इन चीज़ों को, vocab skills को, especially उर्दू राइटिंग को. तो उस तरह it was luckily very smooth because I managed to carry my academics along with my music somehow और transition पर. Yeah, absolutely. That वो पिछली दफा बात भी थी ना. You did I don't know if you know, I'm pretty sure you do if you've checked out the podcast. वो था कि एक archive के अंदर वो there's a piece of your music. हाँ, my mixtape. Yeah, I his got mixtape archived as part of in the Lum's library. Yeah, it's part of the Lum's Library Historical Archives. Because it happened for the first time. No one submitted a final project as a mixtape. Yeah, that was his final project. No one? I mean, पाकिस्तान में किसने किया? That is incredible. Actually, I wanted to ask you about that. I wanted to take you back to when you first, because I watched the last podcast. Bummed I couldn't be a part of it, but I wasn't in the country. But matlab, I saw that you were, you talked about, you started rapping in A-levels, and then of course there was the come up 3 years. I mean, way longer than that. You've been rapping in Urdu for 3 years. But usse pehle, how many years has it been वैसे in the rap game? 2, 3 और फिर लम्स के यूनिवर्सिटी के 2 साल लगा लो, 2, 3, 7, 5, 6. Okay. तो total 7 years almost. Wow. Like And 7 years. I want to take you back to year one. Like, what was the rap scene like, I guess? And can you recall not just like, of course, reception, response, crowd reaction, wo sari cheezein bhi, if you can talk about that, but also who were the guys around you who were also in rap, and can you name any of them? Are they still around? So glad you asked this because no one mentions them itna zyada, and I always want to shine light on pe. Who are the homeboys basically? So when I was coming up, उस वक्त जब मैंने original content निकालना शुरू किया था, शुरू में people who reached out to me etc. Luckily उस वक्त political rap music was around उस वक्त, लेकिन mostly English में हो रहा था. उर्दू में जो हो रहा था उसमें मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा नाम उस वक्त दरांती ग्रुप. I don't know if you know Daranti group, Hassan Amin वगैरह, right? So these were, some of them were previous metal heads जो switch करके rap में आ गए थे. You think my switch is big? Like इस तरह के rappers होते थे who switched from metal to rap, hardcore, leftist music etc, rap music etc. Brilliant. तो उस वक्त before you had the rhythm fests and these big festival, उस वक्त होता था रायमिस्तान. अब नहीं देखा तो रायमिस्तान was an underground लाहौरी hip hop event, old लाहौर में होता था. उसमें जाके हम जो है साइफर्स करते थे, परफॉर्म करते थे, बैटल्स होते थे उसमें. तो उसमें आई यूज्ड टू गो. अ लॉट ऑफ रैपर्स, रोजियो बैक देन वो भी इंग्लिश में कर रहा था. ही वाज आल्सो देयर इन the rap battle scene. हाँ, a lot of the rappers you see अभी वो they've been around तब से. And how, of course, competitive the ball hota hoga, especially with rap battles, and like people have seen that imagery. I'm sure it looks nothing like 8 Mile or whatever. Like you see these people on screen. कभी you see some rappers on screen. It's very easy to dismiss कि oh एक गाना hit हो गया. You don't know कि पीछे कितनी grind है उसके. Yeah, for sure. Like मैंने जैसे भी एक example दिया, Rosio has been around. तो मैं जब से शुरू कर रहा हूँ वो भी पीछे से तभी etc. तो ऑल ऑफ देम. लेकिन उस वक्त ना अगेन आई थिंक जनरली लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था उर्दू में करने का. इट वाज स्टिल वेरी वेस्टर्नाइज्ड इन द सेंस मोस्टली इंग्लिश में ही कर रहे थे लोग. और लेकिन लकीली पॉलिटिकल रैप बहुत ज़्यादा था, इसलिए आई वाज वेरी हैप्पी उस सेटिंग में. लेकिन अल्टीमेटली आई स्विच्ड एज वेल, और वो भी जो है सीन थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो गया इवेंचुअली, और इंडी सीन में ज़्यादा वो मर्ज हो गया. You said political scene बहुत था, that was good for you. I'm surprised because Abhi, I think you're a unique voice in Pakistani hip hop in terms of the political message, the content that you are putting out there. और इस तरह का, maybe it's my ignorance, I don't know अगर इस तरह की कोई और रैप कर रहा है. वो सारे जो उस टाइम political scene था, अब उसमें से I don't see anyone except you. What happened along the way? Can you tell us? और दूसरी चीज़, what do you think the pros and cons that you feel of being the only political voice, so to speak, in the rap game right now, being someone who's taken this niche, और अकेला एक जो है ना मैं एक कर रहा हूँ, उसके obviously pros and cons भी होंगे. What do you think?
Acha, regarding ke whether I am the only one, I would say maybe जिस तरह का political rap मैं करता हूँ, maybe that's unique उस sense में. लेकिन I do think a lot of rappers इस वक्त, even though they're not overtly political, उस sense में, लेकिन a lot of sometimes there is a lot of political referencing etc. I think if you talk about social issue in the sense, आजकल एक गाना बहुत in है यार, वो Cold Hours by Aleem, बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, और अगर वो सुना, वो स्पॉटिफाई की टॉप 10 में भी आ गया. तो अलॉट एक नया ट्रेंड आजकल आया हुआ है, एक प्लेलिस्ट पूरी स्पॉटिफाई बनी हुई है सैड बॉय एंथम्स. हाँ राइट. तो लॉट ऑफ, अब is this not also political to extent, as a lot of rappers are talking about mental health issues in their music? अगर इस तरह सोचो, I meant more in the sense के definitely, but I meant more in the sense historical political context. उस sense में sure. लेकिन I wouldn't mind considering them also के I'm glad के rappers are comfortable talking about these things as well. But हाँ, जहाँ तक pros and cons की बात है, हाँ, as far as colonial references go, it's colonial referencing goes, I do feel very isolated. उसका सबसे बड़ा cons ये है, मेरा production process पूरा सब कुछ, it is isolating. It's difficult for me to reach out to people because I know कि अगर मैं किसी को as a feature ला रहा हूँ ना, they need to serve a purpose. Like Eva B and Manu, I've known them since years. लेकिन अब आके I was comfortable enough and I knew this was this right song उनके लिए, तो I managed to bring them in. इससे पहले मैं features कभी उस तरह करता नहीं था. तो and they killed it. मतलब मेरी जो सबसे फेवरेट वर्सेस हैं बहुत ईवा बी और मानू के डिस्कोग्राफी की, वो लकली मेरी अपनी एल्बम पे है, तो मेरे लिए से कोई खुशी की बात नहीं. तो हाँ, उस सेंस में ये होता है कि इट्स हार्ड टू कोलैबोरेट विद पीपल. एक तो ये कौन है, because I don't collaborate for the sake of collabs. It needs to serve a purpose. It needs to serve a purpose on the song. I think pros are very personal. It's fulfilling मेरे लिए. Talking about these things provides me a sense of gratification or purpose, etc. तो I think pros are very personal. Pros का मैं commercial level पे नहीं कह सकता, because political rap और political content art बनाने वाले को generally हमारे मुल्क में हमेशा से sideline किया गया. I meant everything, even personal. तो personally हाँ, मतलब for me it's fulfilling. लेकिन and you think that means that you have a hardcore fan base? So for example, niche लोगों का एक ये चीज होती है. So for a lot of underground rappers, for example है, उसकी इतनी following बेशक नहीं होगी, but the followers that were there, they were मतलब वो hardcore fans. Do you feel that? I agree. The Immortal Technique, one of my biggest influences growing up, he once said कि if you make political rap music या political music in general, इसका एक pro ये है कि वो कभी relevant नहीं होगा. And the more I think about it, अब तो makes complete sense. लेकिन back then I was like, what does he mean? लेकिन मुझे समझ आ गई, because the world is such a messed up place. ठीक है, हमेशा society there'll always be something to talk about society में. तो as I could be in my middle ages, ठीक है, and still make music which is relevant, because politics is not going to be irrelevant. ये social issues are never going to be irrelevant. ठीक है, trends आते जाते रहेंगे. जिन लोगों के career trends पे dependent है ना, वो trend जाएगा, उनका career भी खत्म हो जाएगा. लेकिन I can, because I make this type of music, I can continue making this even आगे जाके. तो हाँ, definitely वो है. I feel that hardcore fan base. Yeah. So on this though, you said कि मैं open to interpretation. I like stuff that's open to interpretation. I don't want to dictate what people should get out of my art, for example. सही है. But with Divide and Rule and with the album that's in place and your colonial music, there's obviously very clearly a message or a thought or a viewpoint that you have in your mind that you're putting 100%, down. 100%. What is that viewpoint? If I want to ask about everything, like this album ke andar, that viewpoint that you're getting across, it's the album art, the album name, the songs, they all serve a purpose. What is that purpose? Obviously, everyone is going to get a different or should get a different view of the album. But according to you, what is your take on the topics that you're covering? The topics range from talking about identity, South Asian identity, or even इसमें if you listen very closely, I've even addressed things like domestic violence and stuff. मैं एक example देता हूँ. Fraudy है, ठीक है? When you hear fraudy है, और when I say खोल आंखें खोल बाहर होता कुछ घर पे करते तोड़ फोड़, ठीक है? There is a double meaning in it, because मैं बताता हूँ, जब हमारा पिछली मीटिंग हुई थी ना, उस वक्त सतोशी कौन, I don't know if you know Satoshi Kon, he's an anime filmmaker etc. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी फिल्म्स, he's one of my favorite filmmakers,
ठीक है. What he does is, it will all link. अभी लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन what he does is in his films, Perfect Blue, Paprika और ये उसकी films हैं, what he does is he'll have a frame, ठीक है, और आप जब वो frame देख रहे होगे उसकी film के अंदर, तो एक scene चल रहा होगा, and that scene is very meaningful. The protagonist, for instance, is being stalked, ठीक है, and that's a very meaningful scene because that's related to that protagonist's life. लेकिन एकदम से he pulls the frame back, and then you realize that scene was actually is within another scene. तो वो protagonist एक act कर रहा है किसी जैसे film में, और बाकी जो है external scene कुछ और है, it's a set film का. तो आपका पूरा lens change हो गया. अच्छा, this समझ आया? तो that's the technique I use even when I'm writing. So a song like Fraudy, when I say खोल आंखें खोल बाहर होता कुछ घर पर करते तोड़ फोड़, तो there's a domestic वायलेंस की बात हो रही है कि किस तरह गुस्सा निकाला जाता है घर जाके. दैट एंटायर सॉन्ग इज अबाउट टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक कल्चर, इफ यू रियली थिंक अबाउट दिस. बट व्हाट्स द मैक्रो लेवल पे जो बात हो रही है, जब मैं गाना लिख रहा था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लेकिन फ्रांस में वो कार्टून बनाया गया था, पूरा मुल्क को तोड़ा हुआ था उन्होंने, जलाया हुआ था, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे. तो दैट्स द डुअलिटी की जो मैं बात कर रहा था, दैट्स द डबल मीनिंग इधर. तो मैं माइक्रो लेवल पे जो बात कर रहा हूँ उसी को मैक्रो लेवल पे कर दो, तो बाहर होता कुछ करते घर पर तोड़ फोड़, तो इस तरह करके. I absolutely love it, but just hear me out here. ये जो अभी the nugget that you gave us कि when you were writing तो ये वो फ्रांस वाला सारा होता था. Now this is the kind of stuff that no one will pick on. Yeah, because no one knows when the song was written, right? Yep, 100%. So this is a very central part of how the song should be, or it's my secret. Should be perceived. It is your secret. But the point is, मैं ये सोच रहा हूँ कि do you feel like there's an avenue to be explored where you sort of have, I don't know, a website or something in which you put down these nuggets जिसमें लोगों को help हो, because it's such a music बहुत ज़्यादा references है, बहुत political है. Do you have you ever thought of putting down some of these thoughts or some of these ideas ताकि लोग अब meaning ना बताओ कि यार तुम ये सुनो और तुम्हें ये पता चले कि domestic violence वाला तो for example एक ऐसी चीज़ है तो double meaning शायद लोग खुद ही पकड़ लेंगे उन्हें पकड़ना. But the other thing that we're talking about here कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही थी and everything, इस तरह की चीजें, do you think it would add to the album experience? I think it would, because it would. इस तरह तो मैं आया हूँ आज. that's part of it, yeah. इस तरह तो मैं आया हूँ because that's why I was, मैं बताए वक्त के साथ साथ I'm comfortable opening up. मैं अभी हमारी बात करने से पहले मैं बता रहा था कि जितना I opened up in the last podcast, the stories I shared, etc. ये मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बताई. तो I'm very slowly becoming comfortable putting myself out there. You have to understand that it's also there's certain amount of risk I take when I openly like explain stuff. जैसे ठीक है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है इधर आके, जितना भी मैं जो तुम नगेट की बात करो मैं बता भी दिया ना. For me this is huge because I would have never done this a year before. तो हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता I am opening up. Maybe someday I can have a 4,000 word essay supplementary जिस तरह गैम्बिनो करता है. बट हाँ, लेकिन then we'll just do podcast. हाँ, लेकिन इसका कौन क्या, इसका कौन ये. Now I've defined it. Now everyone will look at the song through this lens. तो वो room for discussion जो है ना वो थोड़ा सा restrict हो गया. समझ आए? तो हाँ, तो ये होता है. लेकिन हाँ, I'm thank you for making me comfortable enough to. No, man, it's our pleasure. Thank you for telling us all of this stuff. Honestly, thank you for choosing us to be the place where you essentially open up. Because honestly, the amount of thought and meaning and purpose that's going in your music, I think we're definitely lucky to have conversations. On that note, you asked this in the last question. I don't think you got to answer, but talking about the album art, it's very particular. Obviously, there's a very nice imagery. You just explain it. What was the ideation behind the album art? Was there something in particular you wanted to get across? Of course, aesthetically it looks brilliant. It's a very good introductory album art because your face is there, and of course the art is just brilliant. So please talk to us about the album art. The album art, I really wish we had ML मतलब all credits go to ML Hasnain. Shout out to ML Hasnain. Go support ML. ML is the one जिसने इसका art किया. She's brilliant. She's one of my favorite artists today. And I knew she was the one who could pull this off because she has a history of making political art. औरत मार्च का poster भी उसने किया था last year. और जहाँ तक album art की बात है,
what I'm comfortable saying उसके बारे में इसके मतलब if you look closely मेरा जो मुंह के अगर तुम लाइन देखो it's the border. I don't know if you noticed this. It's the border और इसलिए जो पीछे जो लैंग्वेज है जैसी वो लाइन स्विच होती है हिंदी और तो वो ज़बान चेंज हो जाती है लेकिन वो जो सफ़ा है वो एक ही किताब का सफ़ा है वो टोबा टेक सिंह का आखिरी सफ़ा है तो दैट्स द पीछे का बैकग्राउंड वो उर्दू में जाते जाते हिंदी में चली जाती है अब ग्रांटेड मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं बंगाली को नहीं इंक्लूड कर सका बिकॉज वो जितना उसका साइज था ना आई वुड हैव लव टू इंक्लूड ईस्ट पाकिस्तान हैव डन दैट बंगाल आई मेड बांग्लादेश आई मेड दैट सेम एरर जो हमेशा करते हैं एक्सक्लूड करते हैं मुझे बहुत दुख है इसका लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम लेकिन आई हैव रेफर टू बंगाल अपने गानों में मैंने से बंगाल का कह तुम्हें आज भी तो याद है तो हाँ आई हैड दैट इन माइंड राइटिंग द एल्बम एंड देन ऑन माई फेस ऑन यू हैव मेरा शक्ल एक साइड पे जा रही है लेकिन दूसरी साइड पे यू हैव some major influences एक तरीके से because you're getting a peek inside what I'm thinking of. So you have someone I was reading a lot while I was writing the album, Bhagat Singh. I was reading a lot of his letters जो उसने लिखे हैं, speeches etc. उसका बहुत role है in shaping how I was writing this album. And I think will definitely shape the rest of my music as well. साथ में बीना दास की तस्वीर है, someone we overlook. We always tend to focus on male freedom fighters जिन्होंने front line पे जाके मूवमेंट चलाई थी आज़ादी की लेकिन वी फॉरगेट पीपल लाइक बीना दास एटसेट्रा जो कि वर इक्वली एक्टिव और उनकी मूवमेंट भी वाज इक्वली पावरफुल जो चलाई थी ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही थी उस वक्त एंड देन इफ यू लुक क्लोजली यू सी द ट्रेन पार्टीशन की जो नीचे बनी हुई है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसपे आई लव दैट इमेज वो बैनर उठाए हुए लिखा हुआ है साइमन गो बैक आई लव दैट इमेज तो इस तरह करके छोटे मोटे जो है उसमें डिटेल एंड kudos to ML for nailing it down perfectly. हमने मिल के जो है ना it took us like 2 months. It took a lot of discussion उस पे ML का process पता है क्या था ये सबसे interesting बात Yeah, I was actually we gonna would ask sit this at her bookstore the last word जहाँ पे वो होती है and we would have conversations we had conversations for 2 months just about जिस तरह हमारे podcast है ना imagine if this podcast was 2 months long. Damn. That was the process of making that album art. तो she wanted to see कि मैं किस frame of माइंड में हूँ एंड उसको माइंड में रख के फिर उसने डिज़ाइन किया मैंने उसको बस इतना बताया कि आई वांट दैट स्प्लिट बीच में इस तरह गुड वर्क टेक्स अ व्हाइल या दैट्स फॉर श्योर तो kudos to ML kudos to her for sure इकबाल बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है सो बेयर विद मी है यॉर्कर हो सकता है नहीं भी हो सकता इसमी के यॉर्कर यार बस क्या करें द म्यूजिक द एल्बम एवरीथिंग इट्स all about colonialism मतलब mostly ठीक है album art भी वो है काफी sprinkles of colonialism that is पिछली podcast में भी you mentioned कि you're a student of history उसके अंदर you focused a lot on colonial history and everything why does this specific period of time in our history why does this specific whatever I call colonialism जो भी एक era थी हमारी why does this interest you so much why has it been such a big focus in your life in a way right it's a big part of your life why this यार so तुमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा आई कैन थ्रो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन बैक व्हाई नॉट अल्लाह माफ ठीक है व्हाई नॉट ठीक है मतलब इफ मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हर इंसान का एक लेंस होता है दुनिया का देखने का ठीक है फॉर मी व्हेन आई लुक एट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन ऑल एक्स फॉर्मर कॉलोनीज इस खत्ते की तो मुझे हिस्टोरिकली किसी चीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं नज़र आता जितना उस एरा का आता है ठीक है तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है एंड ऑल्सो थोड़ा सा आई वुड डिसएग्री इन द सेंस के colonialism is the main theme of the album. If you really notice, मैं colonialism से कम बात कर रहा हूँ और colonization की बात की ज़्यादा बात कर रहा हूँ. I wanted to come on that कि उससे जो link है. But it's obviously you do it वो duality है ना कि एक चीज़ हुई और दूसरी follow हुई. Exactly. I address the past की चीज़ and then I make a current reference उसमें, which पहचान is all about उसके बारे में. तो हाँ, in that sense, it fascinates me और in terms of the impact जो मैं देखता हूँ society में. Once I started reading colonial literature and digging deep, मेरे लिए से दिमाग जितना वो मैंने bubble burst moment की बात की थी उससे बड़े मेरे लिए कुछ नहीं था. आसपास like you start understanding your surroundings much more clearly. For me, ठीक है? Everyone has a different lens. For me, this era जितना इसका influence है how we operate day to day. And also you mentioned कि हमारे पे कितना blame है. You might have noticed कि इसमें मैंने कितना ज़्यादा blame place किया to a certain extent.
बिकॉज एक होता है ना पार्ट डिपेंडेंस के लास्ट जो चीज हुई उसकी वजह से you're Right. on a course, Right. but obviously there comes a point where you have the onus maybe to somehow there comes a critical juncture Right. where maybe Exactly. put off that course or you can choose to get off it or something like that. हमने हमारे साथ ज्यादती हुई, फिर हमने अपने साथ भी बड़ी Right. जान हैंड की. What we took away were not the चीजें जो हम we could use Yeah, to develop exactly. ourselves. वही पहचान में वो आखिरी लाइन यही है ना, वो गए लूट कर और हम क्या सीखते, अपनों के दरमियान हम आज तक लकीरें खींचते. तो हाँ, तो मेरा कोशिश ये होती है कि आई ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन द टू, और हम जो कर रहे हैं इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम अपने माइनॉरिटीज के साथ Yeah, करते हैं, वो exactly. कितना कोई डिफरेंट. How are we different from those extractive sort तो of yeah, institutions? it's a cycle of violence. Let's just say. I have a question. This is not open-ended at all, but I think Ismi started the last podcast with a stupid question, so I'll jump in with a stupid question Yeah, now. those are No, you the- said this is a stupid question. You asked him if his name Iqbal has to do with Iqbal, and then you asked the question. Remember Why that? are we? Yeah, I'm just saying, man. Like that was the question, and you prefaced it as a stupid हाँ, question. वो तो मैं I'm not a कहूँगा. You're million. not मेरी allowed गलती, to मेरी say it. No. Anyway, how's it your fault? Because your name's Iqbal. My bad, guys. Okay. So recently, God, I feel stupid asking this question now. Queen Elizabeth died. हाँ, Lizzie Right? passed away. Lizzie, Lizzie. our boy Lizzie, right? Boy. Whatever, Huh. man. She passed away, right? And She passed. so in Pakistan, what I noticed was there was two extremes that were currently ongoing. I just want to understand how you felt about not just the passing of Lizzie, but also, how you felt about the one camp which was going, oh, she's dead. No, we're gonna miss you, Queen. And the Pakistanis, I think even the Pakistani Twitter, like the government Pakistan's Twitter, put up a. वो तो करते हैं. Okay, sure. Diplomatic. But it's all part of. But Yeah. there was one side which was going, "Oh, rest in peace," and then the other side was just going, "Fuck you, burn in hell." Sorry, Yeah, बहुत yeah. काट रहा Go. हूँ. नहीं, नहीं, हमेशा नहीं. ट्विटर पे होता है, हमेशा कोई मरता है ना फेमस बंदा. हाँ. एक पाकिस्तानी ट्विटर में ना एक जो है ना एक उन्होंने ना वो रखी हुई है, ये रिपीट होनी ही होनी है. चल फिट है, but इस केस में specifically like थोड़ा सा वो आता है कि यार obviously you can understand what the retorts to both sides is one, why are you mourning her death, because fuck 100%. you know what I mean, like, 100%. I was even- मेरे फीड पे एक इवेंट आया हुआ था किसी स्कूल का, I won't name the school, लेकिन वहाँ पे पूरी फ्यूनरल सेरेमनी हो रही थी और सारे खड़े हुए थे और- ऐसे ऐसे उधर ही क्वीन. choir हो रहा था even उधर. our state narrative Park studies books can explain to you why you shouldn't be going there going, oh. But then obviously the other side is like, don't wish like ill upon someone who's already dead, you know That's what I the mean? Like other. That's the other camp. there's two extremes. So how did you feel about all of this? And you can cuss out the Queen if you want, it's all up to you. नहीं, मैंने एल्बम पे बोल दिया जो बोलना था. I think it's very clear how I feel about this, so I don't need to specifically say. लेकिन मैं I will say this. मुझे बस इस बात की खुशी है कि ये डिस्कशन हो रही थी, ठीक है? Because I don't think maybe 5-6 years ago, if this happened, I would say that side which is mournful, that would dominate. ठीक है? तो पिछले 5-6 साल से there's this growth जो मैंने notice की even in academia or in these discussions, especially in terms of like gender और आजकल ये transgender bill पे जो debates चल रहे हैं etc. I'm glad कि these discussions are taking place in Pakistan. और यहाँ के लोग कर रहे हैं. हम ये नहीं कर रहे कि बाहर का कोई गोरा आके जो हमें बता रहा है कि अच्छा नहीं, ठीक है? तो मुझे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट डिस्कशन हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट समवन हु इज मोर्नफुल इस चीज पे. आई एम नॉट लाइक लुकिंग बैक, हो क्या दिन थे. नहीं, इट्स अ फैमिली, दैट फैमिली एंड हरसेल्फ पीपल से. मैं बताता हूँ व्हाट पिस्ड मी ऑफ वाज कि न्यूज़ चैनल्स ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका, CNN, BBC या सारे जितने भी थे, उनके पास भी कुछ तारीफें करने को नहीं थी. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, वो क्या कह रहे थे? शी फुलफिल्ड हर ड्यूटीज टिल द वेरी लास्ट मिनट. और मैं ये सोच रहा हूँ, हाउ इज दैट अ गुड थिंग? हर फुलफिलिंग हर ड्यूटीज मीन्स कि वो उस मोनार्की के, उस ऑप्रेसिव सिस्टम को जिसने दुनिया भर में 400 साल से लूट और कत्ल किए हैं, ठीक है? मतलब मैं सिर्फ बंगाल के फैमिन्स की बात करूँ, वही मतलब दैट्स इनफ. तो हर फुलफिलिंग हर ड्यूटीज इज जस्ट अ वे टू कीप दैट सिस्टम रेलेवेंट. हाउ इज दैट अ गुड थिंग? और अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रही है. तो मुझे उस चीज ने बहुत बॉदर किया. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. दैट यही तो टेरेबल बात है कि दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट सिस्टम अभी तक. The word duty and but the word duty and
mixing that up with something like being a part of a monarchy. That level of privilege, It's duty. very like duty. Exactly, yeah, like exactly. Huh. no, dude, you're the queen. Like people say, queen. Yes, queen. She's the queen. she How's that a duty? she was the queen. Even India, जब Yeah. colonial rule यहाँ पे था. And people were saying, oh no, she's not that bad. It was the last. No, no, no. मजे की She was an बात ये है- active participant. मजे की बात ये है कि ड्यूटी भी कहा थी उसको, तो अब बिल्कुल ही उन्होंने एक सारे उसमें रख दिया था कि भाई हाँ. तुम बैठी रहो बस आराम से, हाँ. हमारा कोई काम नहीं है. and सिर्फ वो नहीं, मतलब I think that entire royal family. Yeah, they're all I just think- chilling. हाँ, अब their उनका equal कोई blame काम- goes to all of them. Equal blame, but also they have no duty anymore. They're just living off the their yeah. name. That's essentially. पहले तो होता था ना, चलो कुछ डिसाइड वगैरह भी कर रहे हैं, अब तो बस बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कोई उसका वो नहीं है. But Bal, coming back to the I album, hope I answered your. No, you. Huh. I'm glad I asked that question. That was a brilliant answer, and I covered all bases. I'm clipping the hell out of that. Just by the way, like ये एक reel बन रही है, guys. और by the way, Watch me. बिल्कुल सेपरेट वो देखिए किसी ने यार, एब्सोल्यूट मास्टरफुल क्वीन एलिजाबेथ पंजाबी डबिंग. Punjabi dubbing. ए मुंडी जब should- तो कार आई है, We should एने dub. स्यापा डाल We should देता है. dub my music on. नहीं, it's genuine. पता है लेकिन- It's about Meghan Markle and she's just going off. You know in what? Punjabi. Coincidentally, मैं बहुत एक stupid बात कर रहा हूँ, लेकिन that death aligned with my album release. Oh. And मैं ये सोच रहा था, I'm not a very superstitious person at all. ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था मैंने पहले क्यों नहीं निकाला. No, You get what I mean? no. तो 10 साल पहले निकाल रही. This shit so fire. Oh, I'm not completing that sentence. You get what I'm Samajh saying? gaya na aap, yeah, bro. Thanks, Iqbal. Job well done. I mean, you could have done it earlier, bro. Great But, album. like, chalo koi nahi. Fair. But back to the album. It made what I was talking about so much more relevant. Yeah. So, Word. yeah. Back to the album. हाँ. 2 questions. They're linked. It's a short album. It's 15 7 songs. minute की है, yeah. हाँ. So 15 minute की 7 songs. वैसे वो भी 7 songs, short songs, right? हाँ. And as an artist, I don't need to tell you, and जो अगर artists वगैरह कोई सुन रहे हैं, they'll know कि the making of an album is a very specific thing. कि आप कौन से song select कर रहे हो, वो किस order में जा रहे हैं, Yeah. flow बन रहा है, वो duality की जो सारी बात हुई थी ना, कि एक के बाद एक वो change flip हो रहा है. Why these 7 songs in this order, and why such a short album? अच्छा, short जहाँ तक बात है ना, I think in terms of run time, हाँ, sure it's short, but look at how much I'm packing in Yeah. 7 songs. ठीक है. मैंने उसमें जब मैं रिलीज की थी एल्बम, मैंने अपने कैप्शन में ये चीज़ लिखी थी, ये मेरा रूल है हमेशा से, और मैं आई विल स्टिक विद दिस. दैट्स व्हाट गिव्स मी सैटिस्फैक्शन. इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सिंस डे वन. ठीक है, तो एक तो वो चीज़, मैं इसको लंबे भी कर सकता था गानों को, मैं और फीचर्स भी डाल सकता था. देयर आर सॉन्ग्स आई लेफ्ट आउट इसमें से विच आई एम सेविंग फॉर लेटर. 2-3 गाने हैं जो उस पर मैंने नहीं डाले. मे बी मैं कभी ना निकालूँ उनको, मे बी, आई डोंट नो. लेकिन इट्स वेरी लाइक मेरा बड़ा फ्लेक्सिबल सा प्रोसेस. मेरी पूरी एल्बम लिखी, प्रोड्यूस, सब कुछ मेरे बेडरूम में होती है, एक लैपटॉप पे इस तरह. ठीक है, देयर कोई स्टूडियो नहीं, कुछ नहीं, बेसिक लेवल इक्विपमेंट वगैरह. तो इट्स वेरी, जहाँ तक ऑर्डर की बात है सेक्टर, वो मैंने बता दी कि इट्स ऑर्डर्ड इन दिस वे. एक तो ये वो डुअलिटी वाली बात कि यू कॉन्स्टेंटली स्विच फ्रॉम हार्डकोर हार्ड हिटिंग सॉन्ग्स टू बाउंसी मोर कमर्शियल बीट्स, लेकिन कंटेंट वाइज में बात उसमें भी वही उतनी हैवी उसी तरह की कर रहा होता हूँ. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स ईजियर टू लिसन टू. अगर मैं इफ़ आई स्ट्रक्चर सुट्टो एंड पहचान साथ में सुपर रैपिटी रैप, और मैं फ्रॉडी और रेंदो मानू वाले गाने को नीचे रखूँ, तो आई थिंक यू कैन, if you look at the track list, a lot of people, they came to my album because they wanted to listen to the Manu track या the Iva B track, so they're skipping all the पीछे, समझ लो. तो इसलिए I had to structure it उस तरह भी listening experience. I hope कि that worked. उस sense में like it holds your attention, कि थोड़ा break भी मिल जाता है. इसलिए if you look at a song like पहचान, उसमें you notice chorus नहीं है, it's an entire verse. Then I give space to breathe because I realize कि इतना कुछ मैंने pack किया नहीं, और ये बड़ा रिस्क होता है कोरस ना. डिफरेंट प्रोडक्शन है, इट्स वेरी पहचान ईस्टर्न वाइब है उसके अंदर. आई थिंक सितार टाइप उसके अंदर बहुत वो स्ट्रिंग, वो मैंने वो बीट जो है उसकी वो मेरी ही बीट है, और मैंने सैंपल लोकल ही सैंपल उठाया था. तो हाँ, तो देयर इज नो वर्स. तो आई वांट टू गिव द लिसनर अ ब्रेक एज वेल. मुझे पता होता है कहाँ सांस लेने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि 7 सॉन्ग्स में ना, दिस वाज लाइक ऑप्टिमम. ठीक है, इससे ज़्यादा होता है इट वुड हैव बीन मे बी टू मच. आई वांट टू सेव फॉर the next album वगैरह. Following up on this, क्योंकि you said कि
break देनी है and some people came to listen to specific songs और ज़्यादा हो तो attention span शायद निकल जाती है. What can you say about the fact कि और do you think कि अब आजकल जो इस हम era में है albums को सुनना लंबी लंबी albums को 45 मिनट 40 मिनट घंटा the album of eras is sort of gone and now we're in the era of singles. We're not in the era of singles. उससे भी छोटा, we're in the TikTok era. वो तो बिल्कुल ही जो बात है, ठीक है. So you're in the era where single का वो 10-15 सेकंड का हिस्सा जिस पे you can make more content या फिर you can right, we're in the TikTok era, which is I think it has its own benefits. I'm on, मतलब I use TikTok. I'm not one of those people जो TikTok को bash करते हैं. for sure. I love TikTok. तो I think we're in that era as well. तो that plays a role as well because अब वो टाइम नहीं है एल्बम्स कंज्यूम करने का 2-2 घंटे की एटसेट्रा. तो डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्म चीजों से जो है वो हमारी वो रुझान यूजुअली नॉर्मली हट गया है. पॉडकास्ट अटेंशन स्पैन जनरली कम हो गया. जनरली वो टिकटॉक इफ यू द वे टू सक्सीड नाउ इज you have to hook me in 10 seconds. If you don't hook me in 10 seconds, you're done. Done for. I just want to swipe. लेकिन I think I don't let that guide कि मैं musically क्या decision लूँगा. थोड़ा कभी maybe definitely कभी does shape कि मैं chorus किस तरह का लिख रहा हूँ. Mostly because live shows में it needs to pull people in etc. लेकिन more importantly I still have that same formula. अभी ये divide and rule लिख लिया. मैं इन सब गानों की videos करनी है मैंने. Even though technically video वाला era भी अब उस तरह नहीं है. People don't watch the entire video वगैरह. TikTok era की जो बात हो रही थी वो video वाला भी I think कम हो गया. अब बहुत से हम अगर मैं एक रेफरेंस करता हूँ जैसे जो के एल्बम विच केम आउट यंगस्टर्स की कितनी वीडियोस हैं उन गानों की. मंजर कशी और ये जो सारे उन्होंने गाने इनिशियली किए हुए थे कोई भी नहीं. ठीक है. तो लेकिन बिकॉज आई लव working on videos, the performance element of stuff. So I'll continue to do these things side pe also. As an artist, does it bother you that we're going to shorter form content? I mean, of course, देखो उसका positive तो हम सबको पता है क्या. And again, it's kind of like TikTok used to be cringe, but now it's cringe to like think TikTok is cringe. Because सीधी बात है, like it's a very good way for artists especially to not only express themselves but reach such a wider audience, you know what I mean? Like there's nothing too wrong with that, but on the flip side, of course, sometimes I feel like we're just getting dumber and we're getting slower and we're getting used to like just quick bursts of dopamine, but that's from a user standpoint. From an artist creator standpoint, does it bother you in that sense? I can't put out an 8-minute cipher and people won't listen to it. Yeah. It does bother me because there's so much I have to say और उसको concise करना ना I think सबसे बड़ा challenge ही होता है. लेकिन उसका pro भी देखो मेरे लिए, because I have this at the back of my mind कि attention span इतना है, तो I have to pack as much as I can in short lines जिसकी वजह से it refines my writing. ठीक है. अब मैं पीछे खुड्डे लाइन वगैरह सुनता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितनी स्ट्रेट अप तरीके से बात कर रहा था. ठीक है. मतलब इवन दो यू कैन स्टिल से कि नहीं उसमें भी बहुत कोडेड तरीके से बात की गई और बहुत रेफरेंसिंग है वगैरह, लेकिन कंपेयर टू डिवाइड एंड रूल नहीं. डिवाइड एंड रूल में मैंने जैसे फ्रॉडी की कितनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी और वो सब. ठीक है. तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक टेंजेंट पे जाने लगा. आई एम वेरी कंफर्टेबल एटलीस्ट विद माई सेल्फ एजिंग एंड मैच्योरिंग एंड लेटिंग इट रिफ्लेक्ट अपने म्यूजिक के अंदर. क्योंकि कभी कभी होता है कि आप फॉर सम आर्टिस्ट एक्सेट्रा या जनरली ये होता है कि आपका एक सॉन्ग अगर पीछे कोई बड़ा रह गया ना, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेस इट. मैंने लास्ट टाइम भी बात मेंशन, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेस इट इवन दो इफ यू आर मेंटली ग्रोइंग. ठीक है. तो मेरे लिए बहुत लिबरेटिंग बात एक्सपीरियंस रिसेंटली हुआ है कि आई रियलाइज कि नहीं, आई वोंट लेट दैट गाइड कि मैं किस तरह का म्यूजिक आगे लिख रहा हूँ. इफ आई एम ग्रोइंग मेंटली आई डोंट वांट कि मैं डम डाउन करूँ अपने म्यूजिक को. ठीक है. तो एंड ऑफ द डे इंडिविजुअली आई एम जितना मर्जी अटेंशन स्पैम शॉर्ट हो जाए, आई विल कंटिन्यू टू आई विल लेट माई म्यूजिक कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट माई लेवल ऑफ मेच्योरिटी या जो भी. तो I don't mind aging या जो भी is what I'm trying to say. Yeah. And from a live performance standpoint, you talked about even last time that you love being on stage, and you mentioned initially as well that you've been in that underground rap game for so long, being on stages, competing with people. It's one thing to like go up and I'm sure to rap a song that you have written or somebody else has written if you're doing a cover, but it's a entirely different beast to stand in front of somebody
let them rap at you, and then you rap at them back. You know, it's a completely. So in terms of stage experience, I would say you are undoubtedly one of those guys who has had, you know, the most amount of time being in front For of an sure. audience. I mean, कोई doubt ही नहीं है इस चीज में. मतलब कौन नहीं होना चाहिए. If you think so, you're stupid. I'm sorry, but you have been on stages when people didn't know what stages in the rap game look like, man. I was so comfortable Rhythm Fest के इतने बड़े. And I was gonna come to Rhythm Fest because I talked to you before the show. I was hosting. That was my first gig hosting, by the way. Dude, मैं बाहर मेरा स्मोक की वजह से remember the smoke. मैं स्टेज के साइड पे मैं जरा दानियाल की तारीफ करने लगा. मैं स्टेज के साइड पे like I don't know if you saw me, लेकिन 5 strepsils और मेरा गला was gone because of smoke. And मुझे ये हो रहा था कहीं मैं स्टेज पे कोरस कर रहा हूँ, गाना कर रहा हूँ, I start coughing in front of 10,000 people. But when he introduced me, for some reason ऐसे लगा जैसे मैंने pre-workout का overdose कर लिया और next level speed. And he was like his intro मुझे लग रहा है वो Super Saiyan 4 like or चढ़ा लो plate and I was like bus gone. Thank you, bro. Thank you. It really means a lot. Being compared to pre-workout is like a You didn't even realize कि तुमने मुझे कितना uplift किया अपनी intro से सिर्फ. So thank you. No, thank you for that performance, man. I like I said, first time I was doing it, मैं combat sports की ring announcing वगैरह करता आ रहा था, तो I just knew one tune. I was like, just stick to it. It's a big crowd. It'll be fun. और अच्छा था, they were responding a lot, like a lot. It was insane. I made a point कि मैं यहाँ से जाऊँ तो they बहुत बड़े नाम थे. I was probably the सबसे छोटा नाम, लेकिन मैं I made a point कि जब ये जाए ना, they go like who was that dude, वो let's look his music up. Bro, I made उनको याद करवा के गया गाने choruses. Yeah, bro, Stunners, Hassan Rahim, these were the guys on the lineup, and you know a lot of other Daniel Zafar and a lot of other guys. But I remember distinctly like you had told them to hit your music before you go up, right? And I introduced you, I was like, IQBAL, and everybody said, oh great, and then the track hit, and then you came up rapping on stage, like you waited for the kick to hit so you can just at that time the dancers and run up on stage. And as soon as you went up, I could, because from my vantage point, I couldn't see your front, I could see the crowd, I could see faces change. Like initially a lot of them, I'm sure, because it's, you know, a younger crowd, a lot of them must have been like IQBAL. But then when you start coming up, like I could see them bounce. I had something to prove. And that was phenomenal, man. Like the way, you know, you start with Khudde line. Or no, Chadhalo and then Khudde line. You start with Chadhalo. And as soon as you went up, you could tell, and this is not a knock at any other rapper that had performed before you, but you could tell this was a big difference. This was somebody who knew their words, who wasn't gonna mumble, who wasn't gonna stutter, who wasn't gonna have any second doubts. You came up, you stood right at the end of that with big ass. Did you notice मेरे beats पे मेरे vocals नहीं होते? It's all live. Yeah, I don't have I was backing. gonna get to that. I don't have backing. Zero backing, and you went up, and everybody understood every single word. Exactly. Second hook, tak they were singing along. And I think I can use this opportunity to tell upcoming performers as well कि it's we see sometimes ये I know कि ये बहुत common है backing track पे rap करना, लेकिन people if you really care about what you're writing ना, you're writing at least. अगर ठीक है लोगों को नचाना है और वो beat के साथ उस गाने पे नाच रहे हैं, you don't care about the words. लेकिन when you really want your words to hit and people to understand, remove the vocals. Yeah. ठीक है, because they stage पे आप ना ऊंचा चीख रहे होते हो and they crash with the vocals on the beat. तो हाँ, तो इसलिए yeah. Yes. How much? But dude, just with that setup, how much do you enjoy going live in front of an audience? And in a moment like that, Rhythm Fest, what are you thinking while you're on stage? What are you thinking while you're spitting those verses in front of so many people and you see them bounce, you see them react? You want to stop and smell the roses for a second, but then you have to remind yourself, oh shit, no, I have 2 more verses to go. Like, what's going through your mind when you're performing? मैं इसका ज़्यादा लंबा जवाब नहीं दूंगा because मैं बताता हूँ क्यों. Because मेरे सामने जो लोग मेरे छोटे से छोटे shows पे आए हैं, शुरू के shows पे आए हैं ना, if you ask them and then you ask the Rhythm Fest पे जिन्होंने मुझे लोग देखा था, they'll say he gave the same amount of energy. मेरे सामने 5 लोग खड़े हों या मेरे सामने 10,000 लोग खड़े हों, आई विल एक मैं मुफ्त में शो कर रहा हूँ फॉर जो भी फॉर चैरिटी इवेंट या फिर मैं आई एम डूइंग अ पेड शो, आई विल लीव एवरीथिंग स्टेज पे. मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती. सो व्हेन आई हिट द स्टेज मेरे लिए बस एक ब्लैंकेट था, एक काला ब्लैंकेट, ठीक है, मतलब एक एंड दैट्स द ब्लैंकेट व्हिच आई सी एवरी टाइम ऑन स्टेज. और मैं बस आई वाज लाइक इट्स जस्ट वन होल
regardless of how many people are there. तो हाँ, I wasn't intimidated. मतलब and sometimes I am surprised. मैं कभी भी सोचता हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड देख के मुझे नर्वस होना चाहिए था. मैंने ज़िंदगी में इतने लोग नहीं देखे कभी, ठीक है, लेकिन I wasn't because it has become मसल मेमोरी में आ जाती है चीज़. मुझे पता है मैंने अपनी पूरी जान मारनी है. I have confidence in my songs, I have confidence in my writing, and I know कि it will stick with the people. और मैं आते ही when I started खुड्डे line, I was expecting कि कोई respond नहीं करेगा, but for some reason like 300-400 people at least. I think when I was आते ही I was like ना तोल में जो सच्चा से फौरन मैंने माइक आगे किया तो कुछ लोगों ने साथ में बोला खुड्डे लाइन कर. तो उस तरह की चीज़ें बड़ी कंफर्टिंग होती है. अगेन वो हार्डकोर फैन बेस, दे विल फॉलो यू एवरीवेयर. तो व्हेन यू सी व्हेन क्राउड ना भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता ना, मेक ए पॉइंट के एंड तक सबको लाइक नाम याद हो, पता हो, डजंट मैटर 5 लोग हैं 10,000 लोग हैं, सबको याद करवा के जाना कि हमने ये इस बंदे को देखा. खैर, One of the main takeaways from the last podcast was for me, for anyone listening, कि this is a guy who looks at art मतलब in an all encompassing way. It's not just कि मैंने रैप लिखा है और मैं रैपर हूँ. It's about performer. इर्द गिर्द जो उसका एल्बम आर्ट है, जो उसके अंदर जो है डिफरेंट आप सिम्बलिज्म जो बीच में डाल रहे हो, सब कुछ. एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट आर योर म्यूजिक वीडियोस. सही है. म्यूजिक वीडियोस की अगर हम बात करें, अभी तक एक गाने की म्यूजिक वीडियो आई है विच इज़ KK AZIZ, राइट? KK AZIZ, by the way, guys, the man performed from start to finish on our podcast before it come out. Like, इससे बड़ा special feature क्या मिल सकता है? And I mean, it was. I was surprised no one spit bars यहाँ पे आके रैपर. एक सलोर ने किया था, but that was after. Yeah, that was after. But yeah, but crazy, yaar. And so the first thing is the KK AZIZ video. I absolutely love it. You've वही बात है कि you've packed a lot in such a small amount of also time and the stuff that you're doing. I think it would be great if you could just walk us through the music video, man. I think, yeah, breakdown by the IQBAL. I'm actually gonna come and sit next to you. I can. Yeah. I mean, you've seen it. I think. I think as far as this video is concerned, it was a collaborative effort between me and the Dance Society of Lumps, जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं. और do you want me to play smoothly? Sorry, यार चार्जर लगा दे, मेरी बैटरी मर जाती लैपटॉप की कसम से. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. You can pause it where you want and then go through it, or you can speak over it. It's up to you. You've got the controls. तो शुरू में you have me in the center, you have 4 people around me, ठीक है, लेकिन those 4 people represent something. शुरू में वो जुड़े हुए हैं, लेकिन as soon as I start rapping, I don't know उसकी अगर आवाज़ खुली है. एक सेकंड. अच्छा, उससे पहले वो जो शुरू में इमेजरी वगैरह आई थी, I know it's pre-part like a lot वो of that. that's me spoon feeding, समझ आए? Because you were saying ना कि कभी-कभी you need to, it would be great if you, हाँ, तो that's me. Like मैं सोच रहा था उस चीज़ के बारे में, तो इसलिए कभी-कभी I do इस तरह I have to sometimes make it obvious. अब तुमने वो पिंक ग्रीन वाली बात पे कर ली, लेकिन I'm sure a lot of people didn't notice वो चीज़. तो you have them being separated into orange and green up, which historically अगर देखो it represents something. Right, it represents partition. और इस तरह करके फिर if you think about the lyrics जिस तरह चल रहे हैं ना, तो मेरे जो movement है ना, it's very literal. जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी की एक lyrical, उसी की एक performance art style से मैं उसी को depict कर रहा हूँ. तो जैसे मैं शौक़ हलाल शौक़ ज़वाल खौफ़, ये जो मैंने लाइन बोली, खौफ हलाल शौक़ ज़वाल, तो you see मेरा हाथ उसी मोशन में जा रहा है, क्योंकि ज़वाल is decline. ये मैंने इसलिए डाला था कि you're waving गोरे खुदा हाफ़िज़, ठीक है. अब when I said दिमाग खोल पढ़ ज़रा आयशा जलाल, तो पढ़ने के साथ I'm making the symbol, and also because Aisha Jalal is a writer, और उसका mostly material is written किताबों में. तो again, can I ask a question? The I would call it, I guess, static over the faces of the dancers and then yours as well. Right. Is that a play on censorship? I leave that open. मैं वो open छोड़ रहा हूँ. I won't think it's a play explain on what censorship, but you can have whatever you want. I love it. ये देखो, I think this was my favorite step इसमें. Do I need to explain this? No. Gotcha. ठीक है, सामने इसकी मजाल.
Gotcha. तो हाँ, वो इनिशियली जो कोरियो हुई हुई थी वो बहुत डिफरेंट थी, बट मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके उसको लिरिक्स के साथ जो है अडेप्ट कर दिया. अगेन मैं कोडेड तरीके से बोल रहा हूँ. आई कुड नेम ड्रॉप द इंस्टीट्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लाठी के सामने लाठी रिप्रेजेंटिंग यू नो, Yeah. ठीक है, यू नो हु. Big boy. सलूट एक ही चीज एक ही जगह होती है जहाँ Defense Club. मुहाफिज के ही बस दिल में दजाल. देयर इज द डुअलिटी वाला एस्पेक्ट, मुहाफिज एंड दजाल बीइंग द एंटी क्राइस्ट. सच कड़वा धोखे लजीज बीच की खला को, अगेन सच कड़वा धोखे लजीज, डुअलिटी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, ऑल अबाउट डुअलिटी. बीच की खला को खोलते मजीद, और वो बीच के गैप को हम वाइडन करते हैं. अगेन वही डिविजन्स की बात करना, और मूवमेंट भी वही वाली हो रही है. अच्छा ये जो है ना, दिस इज वेरी फ्लोरेंस. मैंने बताया था फ्लोरेंस और बियॉन्से एटसेट्रा का परफॉर्मेंस आर्ट स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फ्लोरेंस इन द मशीन. तो इस तरह की मूवमेंट्स अगर तुम उसकी वीडियो देखो ना, वो भी यूजुअली इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करती है. Can I also just make another observation? I feel like I'm in literature class again, or मैं कह रहा हूँ the writer intended, but you're firmly in the center. I'm in the center and I'm wearing grey. Yeah. Because एक साइड पे इंडिया, एक साइड पाक. Yeah. So you. नहीं, but I'm also wearing grey for a reason, because we tend to look at ना बोल. कितना ज़्यादा, ना बोल. because I think दुनिया is not black and white. Yeah. Shades Most of grey. things are grey is what I'm I trying to agree say. with you. And right in the middle, I mean, हाँ. I think there's a very strong, and I like it. Yeah. Right. So दोस्त रखे दूर, दुश्मन नज़दीक, and then I say नज़र हर चीज़ पर, मुनकर नकीर. और मुनकर नकीर जो आपके फरिश्ते होते हैं, नज़र जो हर चीज़ पे रखते हैं. लेकिन मैं लोगों की बात करूँ कि हर चीज़ पे हर दूसरी चीज़ की नज़र होती है. And that's when they do the angel वाला, ये Yeah. एंजल वाली मूवमेंट वो करेंगे, फरिश्ते वाली. देखो मुनकर नकीर, Yeah. चुप रहता है. So when I say कत्ल, I do the वाली चीज़. Cold. और एंड पे वापस मिल जाता है, I'm in the middle. It comes full circle एंड पे. Ice cold. Is that how you want it to be? क्या कि वापस मिल जाए. क्या सवाल पूछ रहा है? Buddy. मैंने कहा थोड़ा तंग तो करो इकबाल को. तो मतलब कौन वापस मिल जाए स्माइल? यार किसकी बात कर रहा है ब्रो? खुल के बात कर. क्या अपना पॉडकास्ट किसी समझ? पर्सनल यार हाँ, मैं अपने प्यार मोहब्बत की हाँ कहानी. उसी की कर क्या रहा हम है. वापस मिल, हाँ क्या हम वापस मिल सकते हैं. जो हम सब की कलेक्टिव एक्स है, हम उसकी बात कर. नहीं, I do think कि we're all part of the same boat. हाँ? मतलब उस तरह सब to सेम a certain extent. for sure. No, that was हाँ. brilliant. तो बाकी वीडियोस आ रही हैं, कब आ रही हैं? I plan to drop the next video next week, जो कि by the time ये आएगा वो निकल यार ये मैथ्स नहीं वो हम निकल कर मेरी चुकी सकते. आबादी है. तो अभी- बेसिकली Date maybe बता दो like वो निकल चुकी होगी तब तक. हाँ, कब तो तक? मतलब Bro, next Friday Which is I don't know, next Friday 17. Exactly a week. Around 17. हाँ. If you're seeing this after, it's out. Go हाँ. check it out. If you're seeing कौन this सा before, गाना है मैंने नहीं बताया. हाँ, अभी हम नहीं ठीक बताएंगे. है, सही अगर है. नहीं, हाँ, हाँ सही है. तब you तक guys शायद gotta आगे. tune in to find out. So इनको मैं भी दिखाता हूँ उसके शॉर्ट्स. बस हमें बहुत बहुत privileges मिलती है. I love it, bro. Thank you. यार यार. कमाल. Excited. Genuinely, I don't think we deserve it, but fit us. जो बात है. Iqbal, the last segment of the podcast. Actually, I got a couple of questions before that. Sorry, it usually never happens. फेंको We were talking about LMM before we went on air, and you know we had Natasha Noorani on the podcast. I don't know if that episode is out yet or not, but in case it's not, stay tuned. If it is, go Shout check out it out. to Natasha. Shout out to Natasha Noorani and shout out to Zara Pracha as well. LMM, like we were talking about before, was that final stage before, you know, like it was the proving grounds for indie straight you know. मेरा वो I can say it was like a breakthrough moment. Yeah. मेरे उस वक्त वो जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज था. Talk to me about LMM. Talk to me about performing that day. Talk to me about not just all of that, but who you were performing with that day, and you know, just run me through the general feeling before and after LMM. LMM will always have a special place in my heart because again, like I mentioned, that was I always dreamed of performing at LMM. जब से मुझे LMM का पता है, because if you make it at LMM, इसका मतलब है कि I think it's if you get recognition from Natasha and Zara, because Natasha and Zara outside of the LMM context have always
held them in extremely high regard because मैं जिस म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा था उसमें वो भी थे, तो हमारी उस तरह भी एक जो है उस तरह भी कनेक्शन रहा है. लेकिन उसके अलावा I'll always be grateful to them for giving me that platform. मैंने properly formally there was उनका proper procedure होता है. मतलब you it's in case anyone thinks कि ऐसे ही नाम आ जाते हैं, we send apps, we send our music and then हजारों में से they pick like 20 या जो भी performers. तो जिस पे मैं था उस पे lineup was me, Karakoram, Wow. Manu, Yo. Faris Shafi, Faris and Talal both, Shamoon Ismail, उसके अलावा Hassan and Roshan. Wow. Nasibo, was this the one with Hassan and Nasibo? Roshan. Huh? Was Nasibo was also there. Oh! So this was the lineup, and I'm glad कि इस lineup में से so many artists then managed to like continue performing, and some of them grew so huge उसके बाद. तो I'm glad कि मस्त. And पता है LMM पे तुम पूछ रहे थे कि how was I feeling? I didn't sleep all night. मैं merchandise में भी ड्यूटी कर रहा था, तो LMM में मैं ड्यूटी भी कर रहा था और मैं आर्टिस्ट भी था. तो एक तो merchandise का काम I was handling all LMM merch. ऊपर से performance की anxiety की वजह से I couldn't sleep all night. तो I performed sleepless and I performed with the drummer. I would love to bring a drummer back अपने live shows में, because उसका level ही कुछ और होता है. Yeah. तो eventually मैं I reach that point कि मैं इतने पैसे चार्ज ले सकता हूँ जिसमें मैं ड्रमर भी साथ ले आऊँ. ड्रमर, if you add a drummer to your live set, level उसका बहुत. तो मेरे साथ ड्रमर भी था, उसकी भी मुझे फिक्र थी, टाइमिंग करना. ऊपर से मैंने बताया मेरे बैकअप वोकल्स भी नहीं होते, तो वो सब चीज़ें. तो हाँ, it was I was super nervous उस वक्त. लेकिन मैं अभी तक I look back, जब भी मैं कभी अपने इंस्टाग्राम के आर्काइव में जाता हूँ और वो मैं देखता हूँ ना 3 years ago ही हुआ था, I get very emotional and teary वगैरह अभी तक. तो it will always be hold a special place मेरे लिए. उसके बाद से things started to change. I started to get school के gigs. रेडियो पे मुझे बुलाना शुरू हो गए. सोफी अंजुम, shout out to Sophie FM 91. Shout out. तो I went on TV for the first time, radio for Is that the when first PTV happened? Huh? Is that when PTV happened? वो जो PTV वाली स्टोरी time. कमीना. मैंने सुना था podcast. Right, तो right ना, but things I started to like उसके बाद ना people started to pick, तो इसलिए I'll always be grateful to Natasha and Zara for giving me that chance. Yeah. हम वैसे थोड़ा overtime भी हो रहे हैं, but I had like मैंने सोचा था ask you rapid fire about the rappers in the Pakistani, like just one word or sentence that you have. Yeah, in mind. I don't know. I don't listen to a lot of. मैंने शायद mention किया. I don't know why you did, but I don't know why I have a hard time believing that. नहीं, I do. यार तू झूठा कह रहा है गेस्ट को, है यार झूठा कह रहा है. नहीं. नहीं, I genuinely don't. At all? Genuinely don't. मैं बताया because यार मैं अपना भी जो म्यूजिक बनाता हूँ ना, mainly it's for my own consumption. Because कोई political उस तरह मैं again हाँ, because I'm making music in such, मुझे इतनी खुशी होगी कि और इस तरह का म्यूजिक हो ताकि मैं सुन सकूँ, लेकिन कोई है नहीं तो मैं कहता हूँ चलो मैं बना देता हूँ. लेकिन बंदा सोचता होगा कि यार ओ शिट ये गाना है. नहीं for sure. मैं बता देता हूँ, मैं वैसे बता देता हूँ कि some of the artists I really respect and I think they're incredible. Yunus, Tala Yunus, he's phenomenal. Manu, मतलब he's on my album. Eva B, come on. Yeah, Eva B is someone, मतलब we've known each other for 4 years. हम 4 साल से कोशिश कर रहे थे. मैं कहता कुछ करते हैं. लेकिन again, I wanted to wait for that right moment. And Fraudy was perfect. And I just want to go on record and say कि the song is about toxicity and toxic culture. उसमें लाइन भी आती है लॉन्डे सारे गेम में नेट जेकब्स जैसे टॉक्सिक, अगर यूफोरिया देखा समझ आ जाएगी. तो खैर, तो it's all about toxic culture. And यार I've sometimes like Eva B को they don't leave in her comments and it makes me, मुझे इतना दुख होता है इस बात का कि उसको भी नहीं छोड़ते यार लोग. मतलब उसके sometimes I read comments and the amount of bullying और इस तरह की चीज़ें, ridicule जो नीचे उसके comments में होता है, like Eva B, ठीक है. ऊपर से उसका म्यूजिक इज ऑल्सो पॉलिटिकल एटसेट्रा. क्या मुझे नहीं समझ आ रही उसका मसला क्या है आपको. एंड ऑफ द डे आई नो क्या मसला है. एंड ऑफ द डे her verse was absolute fire, by the way. That's amazing. फ्रॉडी. Yeah. हाँ, थैंक यू सो मच. तो आई थिंक शी वुड बी परफेक्ट उसके लिए. और उसने आते ही उसकी वर्स में तुम बातें सुनो, उसने इसी चीज पर ड्रेस किया. उसकी वो लाइन है नहीं है कि शी टॉक्स अबाउट कि जज करना और क्या कहती है, तभी तो करना जब खुद का तुम्हारा जो है ना साफ हो अंदर से, मतलब खुद अंदर से सब जज वगैरह मैले तरी, मतलब every red flag you possibly have, घटिया तरीन लोग, लेकिन you're quick to judge someone like Eva B. तो हाँ, I'll always have respect for her and I would love to work with her continually आगे तक. मानू, Eva B both. हाँ, तो यूनस, Eva B, मानू,
इससे ज़्यादा नहीं इसके अलावा ज़्यादा मैंने नहीं सुना. सही है, फिर समझ आ गया. यार मैंने तो पूरा नाम लिखे हुए थे, मैं पूछूं लेकिन नहीं, इससे थर्ड पॉडकास्ट में करेंगे. यार so इजाजत है सर. Yeah, so Iqbal, the last segment of the podcast, which is obviously your segment. Whatever you want to get off your chest, say कोई तीसरी पॉडकास्ट की बात करनी है कि अभी से हम कोई डील शील कर लें, कोई प्लान बना लें, कोई म्यूजिक है जिसको रैप करना है, whatever you want to do, say कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. मुझे अपने म्यूजिक का कुछ नहीं पता होता कब निकलेगा. मैं अगले महीने एल्बम निकालूँ फिर बैठूंगा. कुछ पता नहीं हो सकता है. You never know. नहीं मैं बताता हूँ क्या. I think eventually ना maybe this becomes a thing. मुझे लग रहा है this might end up becoming a memoir मेरे लिए, कि मैं अपना पिछला एपिसोड आ गया, I can track my progress कि मैं mentally किस जिंदगी में कभी मैं फ्यूचर में जाके देखूँ ना, अच्छा मैं जिंदगी में किस स्टेज पे था eventually, और I can see whether I'm growing या मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ. तो उस सेंस में maybe मतलब हाँ शो ऑन द माइक. पता है आइडिएशन यही है, इट्स एन आर्काइव फॉर पाकिस्तान कि 10 साल बाद लोग if someone searches Iqbal, they have 2022 में इकबाल क्या बोल रहा है. नहीं, the people who follow you, support you, उन्होंने जब podcast, I saw the comments, they were so heartfelt. मुझे they were so genuine, और मुझे मतलब I would 100 दफ़ा बुलाओगे मैं 100 दफ़ा आऊँगा. So I would just say कि thank you for giving me a platform, for giving my album a platform, for going into depth and for asking the best possible questions and for giving me the space to be this comfortable. क्योंकि मैंने बताया कि मैं usually I don't open up इतना ज़्यादा. It's absolutely our pleasure, dude. And it was like we were more than over the moon to have you the first time. We feel like we really feel like we get more than we're benefiting from this. Should we end this the same way we ended the? Bro, for sure. What? Are you crazy? Some bars, bro. Sawal hai koi, bro. Ladies and gentlemen, I present to you the undisputed, undefeated, the one, the only, the KK AZIZ of the rap game. Ladies and gentlemen, this man doesn't just write lyrics, he writes poetry, he writes history. He's not a student of the game, he's a student of history. He is IQBAL. I can't out rap what you just did. अच्छा यार. इसको बिठा दे. क्या हो गया? Okay. Let's go with this. सिर्फ शोर है, ना नीयत पाक ना किसी बाजू में जोर है. 70 साल गुजर चुके, अब तो मर्द मोमिन की निगाह भी कमजोर है. गीबत इतनी के आदम खोर है, दिखने में दोस्त पर दिल में चोर है. हक की राह पर क्या चलना, यहाँ जब वो पुल से रात से भी पतली डोर है. हाँ, हमें किसने पाला, कांटों का हार था, कभी नोटों वाला हूँ शायर में, जोशो खरोश वाला, तभी रहन सहन खाना बदोशों वाला. सुन, सब इतने ढीठ क्यों, अपनों की तरफ रखते हम पीठ क्यों. भरा इल्म इन गानों में सीख तू, इकबाल रैप गेम का सुल्तान जैसे टीपू. Ladies and gentlemen, लास्ट वाले की तरह ना. oh my goodness, ladies and gentlemen, bars and bars, ladies and wow. And I don't need a beat. Yeah. Don't need a beat, don't need a beat. Prior notice, don't need nothing, bro. No mixing, bro. This is brilliant. Thank you so much. No, thank you. I think the only thing left to say is to please, for the if you need any more convincing, which I don't think you do, go to IQBAL's Spotify page, follow that shit, make sure you like, all of that. And join the coffee. On the mic. Buy IQBAL a coffee, yaar. Ice black, yaar. नहीं जो तुम लोगों का platform है. Yeah, exclusive. Please buy us a coffee. Go to the link in bio, and if you believe in our work, what we're doing. If you want more conversations like this, man. Yeah, if you want this stuff, then give us your money. But over real, like, please support the channel as much as you can. Like we said, support IQBAL. Go stream KK AZIZ's music video. Go stream all of the album. It's literally like a smile set, 15 minutes. So it won't take audio too much of your is time. up on YouTube and Spotify. All everywhere, free. It's out there everywhere. And the next time IQBAL is hitting your town for a live concert, your ass better be there. See you live. IQBAL, thank you so much, my friend, for the pleasure of, for our pleasure being here and everything. Smile, anything you want to say? I'm just really overwhelmed every time he comes on, man. I'm really glad he chose us to give out so much and to put out his music generally as well, man. It's a pleasure. Thank you guys. No, it's been surreal. It's been real, and undoubtedly this has been one of the better feeling podcasts that we've done, and one of those which are really gonna leave you thinking. Keep interpreting, keep thinking, and please, for the love of God,
और keep दूसरों की सुन लिया करो. yeah, listen and just be open to it. And there are conversations like Iqbal said that are happening now that should have been happening 5 or 10 years ago. Better late than never. Keep having those conversations, keep using your voice. Strength is in numbers. The more of us talking about the same thing, they can't touch us, they can't stop us. So do that. And yeah, I just have one thing left to say: keep it tight. Take it easy. We'll see you next time. Go buy us a coffee.